हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंस्पिरेशनल कोटेशन है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। सी, यू आर नेवर टू ओल्ड टू सेट अनदर गोल और टू ड्रीम ए न्यू ड्रीम। ऑलवेज मेक ईच डे योर मास्टरपीस एंड रिमेंबर दैट योर ग्रेटेस्ट एसेट इज योर माइंडसेट। योर ग्रेटेस्ट एसेट इज योर माइंडसेट। आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। Your greatest asset is your mindset. And difficult roads often lead to a beautiful destinations. Difficult roads often lead to a beautiful destinations. Right. So start where you are, use what resources you have, and do what you can. Do what you can. Otherwise, in the end, we only regret the chances we did not take. Otherwise, in the end, we only regret the chances we did not take. ऐसा ना हो कि बाद में हमको सोचना पड़े, रिग्रेट फील ना हो कि अगर मैंने दिसंबर अटेम्प्ट में अगर चांसेस लिया होता, अटेम्प्ट दिया होता, एग्जाम दिया होता तो मैंने पास कर गया होता। राइट। सो इसलिए स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, do what you can, and don't waste your time. This is the perfect time to give your best, right, so that your future will be thankful for, right. So इसी मोटिवेशनल कोटेशन के साथ आज का ये सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ जो रिसेंटली दिसंबर 24 टर्म में जो एग्जाम हुआ था, राइट, वो कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पार्ट आज अच्छे से डिस्कस करना है। सेक्शन ए जो कि कंपलसरी है, 15 मार्क का क्वेश्चन आता है। ईच क्वेश्चन का वेटेज है 2 मार्क्स, 15 इंटू 2 30 मार्क्स, राइट। एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आज अच्छे से डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट्स और अप्रोच का क्लैरिटी मिले, राइट। एंड सीएमए फाइनल लॉ में मार्क्स स्कोर करना रिलेटिवली इजी हो सकता है, स्पेशली अगर आप एमसीक्यू में अच्छी कॉमन ले आए, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप एंटायर बुक को 2 to 3 बार बाई पेज या फिर लाइन बाई लाइन अच्छे से पढ़ें, ताकि कोई भी छोटी सी सेंटेंस या फिर कोई भी एमसीक्यू आपका मिस ना हो, राइट। एंड एमसीक्यू में प्रिसीजन बहुत जरूरी होता है और ये स्ट्रैटेजी आपको एग्जाम में हाई स्कोर करने में मदद करेगी। एंड इस बार जो दिसंबर 24 टर्म एग्जाम हुआ था, वहां पर ओएमआर बेस्ड आंसर शीट आई थी जो एमसीक्यू के लिए काफ़ी यूनिक थी। यहाँ आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन का सर्कल करना है एंड जस्टिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो इस वजह से एक्यूरेसी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, राइट। एंड इसके सेकेंड पार्ट में जो कि सेक्शन बी है, सेक्शन बी पे हमको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 14 इंटू 5 70 मार्क्स का, राइट। एंड सेक्शन सेकेंड पार्ट में हम एक और वीडियो के थ्रू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे विद केस स्टडीज ऑल्सो, जिसमें हम सॉल्यूशंस और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, राइट। सो दैट कि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, क्लैरिटी आ जाए, एंड ऑल्सो साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगा, राइट। तो हम सॉल्यूशंस और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी साइमल्टेनियसली करेंगे, राइट, जो आपको आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, राइट। सो स्टे ट्यून्ड और इंश्योर करें कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर चुके हैं ताकि कोई भी सेशन आपका मिस ना हो, राइट। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सेक्शन ए जो कि कंपलसरी नेचर है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन हमको अटेंड करना है, 15 इंटू 2 30 मार्क्स मिलेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 2 क्वेश्चन का आंसर जो है मैंने मार्क करके रखा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज PQR Limited wants to shift its registered office within the city limits. Thus, this can be done through what? Special resolution या फिर board resolution या फिर approval of the ROC या फिर approval of the central government, right? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, that is board resolution, right? क्योंकि हम पढ़कर आए हैं लॉ के अंदर, शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम सिटी और लोकल लिमिट्स does not require shareholder और regulatory approval, right? shareholder या फिर regulatory approval का requirement नहीं है when shifting the registered office within the same city, right? It can be done through a board resolution simply,
as per the provisions of the Company Act 2013. Then second question, in the parlance of the Companies Act 2013, loan means what? Loan means what? Cash credit या फिर शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर रेवेन्यू पर्पज, लॉन्ग टर्म लोन्स या फिर वर्किंग कैपिटल लोन, राइट? तो इसका भी राइट आंसर होगा कैश क्रेडिट, जो कि है ऑप्शन नंबर ए. क्यों? वो इसलिए हम कंपनी एक्ट 2013 के अंदर पढ़ रहे हैं द टर्म लोन इज इंटरप्रिटेड ब्रॉडली टू इंक्लूड various forms of borrowings including cash credit, right? So it essentially refers to any financial assistance provided that and is expected to be repaid irrespective of its purpose or tenure. It is expected to be repaid irrespective of its purpose or tenure, right? तो इसके लिए जो सुइटेबल आंसर है वो है कैश क्रेडिट, राइट? तो शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर रेवेन्यू पर्पज नहीं होगा, लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं होगा, वर्किंग कैपिटल लोन भी नहीं होगा. जो राइट आंसर है वो है कैश क्रेडिट, राइट? देन थर्ड, ए कंपनी में रिमूव ए डायरेक्टर थ्रू विथ व्हाट? बोर्ड रिजोल्यूशन के साथ, या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर्स के साथ, या फिर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, या फिर अप्रूवल ऑफ द आरओसी, राइट? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर्स. ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, राइट? क्योंकि एज पर सेक्शन 169 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ए कंपनी may remove a director before the expiry of their term through an ordinary resolution passed by the shareholders in a general meeting after giving the director a reasonable opportunity to be heard. Okay, so right answer होगा option number C, ordinary resolution of the shareholders. Fourth, which rule of the company's appointment and qualification of directors rules 2014 provides a detailed procedure for making application for allotment of deed, right? तो देखो कहीं पे भी इंस्टीट्यूट ने MCQ पूछ रहा है, राइट? रूल भी पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर क्या होना चाहिए? रूल 12 या फिर रूल 11 या फिर रूल 10 या फिर रूल 9, राइट? तो राइट आंसर होगा रूल 9. रूल 9 होगा राइट आंसर. क्योंकि रूल 9 ऑफ द कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014 प्रोवाइड्स द डिटेल्ड प्रोसीडियर फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ ए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट? तो रूल 9 के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है द डिटेल्ड प्रोसीडियर फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डीड. Then question number 5. The insolvency professional proposed shall be continued या फिर rejected by the adjudicating authority based on information on IP to be sent by the board in case none is proposed. The AA shall request for nomination within dash to board and board shall nominate within dash. Right? तो right answer क्या होना चाहिए? Option number A, 7 days with 10 days, या फिर 3 days and 10 days, या फिर 5 days 10 days, या फिर 10 days 15 days. क्या होना चाहिए राइट आंसर? सी, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 3 days 10 days. क्योंकि एज पर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, दैट इज IBC, द adjudicating authority shall decide on the continuation or rejection of the proposed insolvency professional based on information from the Insolvency and Bankruptcy Board of India, which is called IBBI. If no IP is proposed, the AA means adjudicating authority, shall request the board for a nomination within 3 days and the board shall nominate an insolvency professional within 10 days. Right? तो इसके लिए राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी. Then next question, under IBC, the resolution professional shall file an application to the adjudicating authority to extend the period of the corporate insolvency resolution process beyond permitted days if instructed to do so
by a resolution passed at a meeting of the committee of creditors by a vote of dash of the voting shares, dash of the voting shares. तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? See again under the insolvency and bankruptcy code, the resolution professional, which is called RP, must file an application to the adjudicating authority to extend the period of the corporate insolvency resolution process, which is called CIRP, beyond the permitted time if instructed by a resolution passed at a meeting of the committee of creditors, which is called COC, with at least 66% of the voting shares in favor of the extension. 66% of the voting shares in favor of the extension, right? तो इसलिए राइट आंसर जो है वो है 66%. Then next question, the format for compliance report on corporate governance by listed entities has been specified to be submitted within specified time limit. Accordingly, Annexure IV has to be submitted to whom? On quarterly basis, on annual basis, on monthly basis, on a half yearly basis, on a half yearly basis. तो राइट आंसर जो है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑन एनुअल बेसिस. ऑन एनुअल बेसिस क्यों? क्योंकि एनेक्सर IV, Annexure IV, which relates to the compliance report on corporate governance by listed entities, is required to be submitted on an annual basis as per the regulations set by SEBI. Under the listing obligations and disclosure requirements, which is called LODR, listing obligations and disclosure requirements regulations, right? तो राइट आंसर जो है वो होना चाहिए ऑन एनुअल बेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, द सेबी हैज रेज्ड द फॉर्मेट इन May 2021 फॉर रिपोर्टिंग ESG पैरामीटर्स कॉल्ड बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, व्हिच इज कॉल्ड BRSR. इट सीक्स disclosure from listed entities on their performance against the principles of National Guidelines on Responsible Business Conduct NGBRC. Each parameter is divided into leadership, former, and essential indicators later. Okay. The binding nature of each are what? The binding nature of each is what? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फॉर्मर इज वॉलंटरी एंड लेटर इज मैंडेटरी. क्यों? हमको पता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, व्हिच इज कॉल्ड BRSR, as introduced by SEBI in 2021, the leadership indicators, which is called former, are voluntary. The leadership indicators, which is called former, are voluntary, while the essential indicators, which is called later, are mandatory for listed entities to disclose their performance against the national guidelines on responsible business conduct, which is called NGBRC. ओके, सो इसलिए जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मर इज वॉलंटरी एंड लेटर इज मैंडेटरी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, SEBI has functions rolled into one body. Which of the following is not the function of SEBI? इसमें कौन सा SEBI का फंक्शन नहीं है? SEBI has 3 functions rolled into one body. Which of the following is not the function of SEBI? क्या है राइट ऑप्शन? क्वासी जुडिशियल या फिर क्वासी लेजिस्लेटिव या फिर क्वासी ऑफिशियल या फिर क्वासी एग्जीक्यूटिव. क्या होना चाहिए राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन होना चाहिए क्वासी ऑफिशियल. क्यों? क्योंकि सेबी परफॉर्म्स 3 की फंक्शंस, क्वासी जुडिशियल एंड क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी एग्जीक्यूटिव, राइट? क्वासी जुडिशियल मीन्स इट पासेस rulings and orders on disputes and violations of security laws. Quasi legislative means it drafts regulations to govern the security market, and quasi executive means
it conducts investigation and enforcement action in case of violations, right? Quasi judicial क्या है? Quasi judicial means it passes rulings and orders. ये rulings and order pass करता है, rulings and orders on disputes and violations of securities laws. And quasi legislative जो है, क्वासी लेजिस्लेटिव, इट ड्राफ्ट्स रेगुलेशंस टू गवर्न द सिक्योरिटी मार्केट. ये ड्राफ्ट करता है रेगुलेशंस को, ड्राफ्ट रेगुलेशंस, राइट. एंड क्वासी एग्जीक्यूटिव क्या है? क्वासी एग्जीक्यूटिव मीन्स इट कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट एक्शन इन केस ऑफ वायोलेशन. इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट एक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट एक्शन, investigation and enforcement action, right? Then question number 10, for the purpose of the Competition Act 2002, the turnover threshold for individual company operating in India in combination is dash crores, right? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई, दैट इज 5000. ये हमको पता है. अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, द टर्नओवर थ्रेशोल्ड फॉर एन इंडिविजुअल कंपनी operating in India in a combination merger or acquisition is 5,000 crores. Merger or acquisition is 5,000 crores, right? Then next, the insurance policy issued by the insurer shall not be questioned after how many days, right? क्या है राइट आंसर? ऑप्शन ए में है 1 year, ऑप्शन बी है 2 years, ऑप्शन 3 है 3 years, या फिर नो टाइम लिमिट, या फिर नो टाइम लिमिट. तो क्या होना चाहिए राइट आंसर? तो राइट आंसर होना चाहिए 3 years. 3 years क्यों? क्योंकि अंडर द इंश्योरेंस एक्ट 1938 एन इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड बाय द इंश्योरर कैनॉट बी क्वेश्चन आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन बाय द पॉलिसी होल्डर्स, राइट. एंड दिस ऑल्सो अप्लाइज टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एज वेल. ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भी अप्लाई होता है, राइट. तो इसलिए राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी. देन इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड मोटर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट. द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, एट द टाइम ऑफ डेथ और एक्सीडेंट, both at the time of taking the policy as well as at the time of death or accident, या फिर at none of these times. at none of these times. क्या होना चाहिए राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, both at the time of taking the policy as well as at the time of death or accident. death or accident. क्यों? क्योंकि in the case of life insurance and motor accident insurance, the insurable interest must exist both at the time of taking the policy and at the time of death or accident. This ensures that the policyholder has a valid financial interest in the insured person or property which justifies the insurance coverage. Right. तो इसके लिए राइट आंसर होना चाहिए both at the time of taking the policy as well as at the time of death or accident. Option number C. Next, the judicial authority under surface is what? DRT या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर सेबी. क्या है राइट ऑप्शन? राइट आंसर होना चाहिए DRT, राइट. क्योंकि अंडर द सरफेस एक्ट, Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002, the judicial authority responsible for addressing matters related to the enforcement of security interest is the Debt Recovery Tribunal. The Debt Recovery Tribunal, right? तो right answer है DRT. DRT means Debt Recovery Tribunal. डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल. एंड सरफेसाई एक्ट के अंदर सरफेसाई मीन्स सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड
Enforcement of Security Interest Act 2002. The judicial authority responsible for addressing matters related to the enforcement of security interest is the Debt Recovery Tribunal, which is called in short DRT. Then question number 14. The decision of Cyber Appellate Tribunal. Cyber Appellate Tribunal can be appealed to whom? Can be appealed to whom? ऑप्शन है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर नॉट अपीलेबल। तो क्या होना चाहिए राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, क्योंकि द डिसीजन ऑफ द साइबर अपीलेट ट्राइब्यूनल कैन बी अपील टू द हाई कोर्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, IT एक्ट 2000 के अंदर अच्छे से मेंशन है कि the decision of the cyber appellate tribunal can be appealed to the high court under the provisions of the IT Act 2000. Right. Next question. This is the last question of MCQ sections. The cases under PMLA, the cases of PMLA can be tried in what? Common court या फिर special designated court set up in this regard, या फिर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो क्या है राइट आंसर? तो ये तो हमको अच्छे से पता है कि द केसेस अंडर PMLA कैन बी ट्राइड इन स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट्स सेट ऑफ इन दिस रिगार्ड्स। स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट्स सेट ऑफ इन दिस रिगार्ड, राइट? Under the Prevention of Money Laundering Act, which is called PMLA 2002, cases related to money laundering are typically tried in special designated courts that are set off by the government specifically for this purpose. Specifically for this purpose, right? तो इसके साथ साथ पूरे के पूरे MCQ जो है वो कंप्लीट हुआ। MCQ बहुत इतना सिंपल नहीं आया था और इतना डिफिकल्ट भी नहीं आया था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, राइट? एंड आपका प्रिपरेशन पूरे अच्छे से 100% अच्छे होना चाहिए। MCQ को कॉमन लाने के लिए आपको क्या करना है, पहले मैं बता चुका हूँ कि बुक्स को 2 to 3 टाइम्स अच्छे से ईच एंड एवरी लाइन पेज बाय पेज अच्छे से पढ़ना है, सो दैट कि कोई भी MCQ आपका मिस ना हो सके, राइट? तो क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, वेटेज है 2 मार्क्स का, तो 30 मार्क्स का MCQ है एंड हमको सिक्योर करना है ऑलमोस्ट 26 मार्क, क्योंकि ऐसे ही तो छूट जाएगा, 2 मार्क्स ऐसे ही छूट जाएगा जैसे जितना भी आप पढ़ो, राइट? एक या दो क्वेश्चन तो ऐसे ही ठीक नहीं हो पाएगा, राइट? तो इसलिए आपको ट्राई करना है कि 26 तक ठीक आ सके, राइट? तो एंड ये है सेक्शन ए एंड एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेक्शन बी का डिस्कस करेंगे एंड साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, राइट? So thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.